अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to Silly Point by Zalmi TV, hosted by the Gulley Cricket Show. मैं हूं आपका होस्ट शयान वसीम और मेरे साथ है मेरे को होस्ट शहरियार. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का प्रीव्यू. Before we get started, please go ahead and subscribe to Zalmi TV. Please go ahead and check out the Gully Cricket Show. The link of that will be in the bio. आज के गेम में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू भी करते हैं पेशावर और क्वेटा के previous games, and we will dive into what we can expect from Quetta and Peshawar in their upcoming game. Peshawar, as we all know, is coming to this game with a win, and Quetta is coming into this game with a loss against Karachi. Peshawar has 4 wins now, but they've all been very narrow wins. I think like a single digit run margin. I think 6 runs का margin है, 8 run का margin है. Very close wins for Peshawar Zalmi. They've been they've been able to play a very settled 11. Even last game में आमिर जमाल की वापसी हुई थी, हसीबुल्ला की वापसी हुई थी, और क्वेटा भी एक तरीके से सेटल्ड थी. I don't really understand कि last game में what really went wrong for them that they had to get all out for 110. But क्वेटा को हम लोग थोड़ा रिव्यू करें. क्वेटा की they've, apart from their first game versus Peshawar, जब सऊद शकील and Jason Roy ने उनका अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप किया था. But since that game, they've been getting starts. Saud Shakil and Jason Roy, they've been getting starts. I think Jason Roy की 50 थी against Karachi Kings, but not this game, the game prior to that. तो उन लोगों का, since that first game, they've been getting starts. They haven't been able to convert those starts into big opening stands like we've seen Babar Azam and Sam Ayub, Colin Munro and Alex Hales. Why do you think that is? Why do you think after a good start for Quetta, their opening combination hasn't been able to go above and beyond the power play? Assalamualaikum listeners and viewers. थोड़ा सा देखना ये होगा कि उन लोगों की जो दोनों का जो पेयर है वो दे आर वेरी रिलायंट ऑन पावर प्लेस. तो जब पावर प्ले ख़त्म होता है और जब फील्ड खुलती है, डिफरेंट बॉलर्स जब सामने आते हैं, तो आई थिंक दे आर नॉट एबल टू क्रैक द कोड ऑफ हाउ टू रन score runs in the middle overs. They are over trying at times, जिसकी वजह से विकेट लूज होना शुरू होती हैं. वी नो के साउथ शकील को इस साल एज एन एक्सपेरिमेंट वो ओपन करा रहे हैं, एंड ही हैज़ बीन he has paid that off, but आप देखेंगे उसकी थोड़ी बहुत limitations अभी भी हैं, which is quite odd क्योंकि he should have been somebody who can score with the frequency in the middle overs, क्योंकि वो middle order में बैटिंग करता रहा है. ओपनिंग उसके लिए थोड़ी सी नहीं है, बट हमने देखा है कि वो पावर प्ले में ज़्यादा फ्रीली रन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इन द मिडल ओवर्स. और फिर वही आ जाती है कि आपको पार्टनरशिप नए सिरे से बनानी होती है इन द मिडल ओवर्स, और उसके लिए जो की एलिमेंट्स हैं वो स्ट्राइक रोटेशन है. टैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से होना पड़ता है क्योंकि आपको हर ओवर के बाद असेसमेंट करनी होती है कि जी कि हमने कितने का रन रेट मेंटेन करना है. अभी जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं फ्रॉम डिफरेंट टीम्स इज दैट they are somehow getting the starts in the power play, but then they lose that momentum in the middle overs. या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा विकेट्स लूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका फिनिश अच्छा नहीं होता. जैसे आज का हमने गेम देखा, क्वेटा स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, मगर उसके बाद जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ है एंड दे गेट इनटू द मिडल ओवर्स, वहाँ पे आके दे सॉर्ट ऑफ they could not understand कि कैसे आगे लेके चलना है, and they just kept losing wickets at regular intervals. So to answer the question is basically they just need to figure out how to go about
scoring runs in the middle overs. आप बहुत बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा टू स्कोर रन्स. आप ये नहीं कर सकते कि आप 10-12 का रन रेट जो आप पावर में मेंटेन कर रहे हैं वो आप मिडल ओवर्स में मेंटेन करना को अचीव करना की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम वही हो रहा है कि इट्स अ हाई रिस्क. एंड देन उसके बाद फिर जब आप विकेट्स लूज़ करना शुरू करते हैं तो जो नया आ रहा है इट इज़ दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट गोइंग. तो जिनको स्टार्ट ऑलरेडी मिल गया है उन्हीं को ही आगे लेके चलना पड़ेगा. अदरवाइज़ हमने जिस तरह से देखा आज क्वेटा ने स्ट्रगल किया, आज जो आखिर आज जो दूसरा मैच हुआ उसमें भी हमने देखा स्ट्रगल किया दोनों टीम्स ने. तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ राइटिंग ऑन द वॉल के you have to be very careful in the middle overs. Yeah, but this looks like this is a problem in Pindi. Pindi के games में लग रहा है कि teams batting first and teams chasing both have an equal chance of winning the game. जैसे आपने बोला ना कि वो मिडिल ओवर का जो पैच है वो थोड़ा ट्रिकी है, और आई फील लाइक कि टीम्स वहीं पे अपना गेम थोड़ा ना मतलब लूज कर रही हैं. जैसे कि अभी पेशावर और मुल्तान का जो आखिरी गेम हुआ था उसमें मुल्तान उन्होंने उनको स्टार्ट अच्छा मिला, बट comes the time of post power play, they were not able to score boundaries, provided के मुल्तान पेशावर ने अच्छी बॉलिंग कराई, but it didn't make sense के they were not going for boundaries, they were rotating the strike. And in a ground like Pindi where boundaries are comparatively smaller than Lahore and Karachi, you would expect के ये लोग boundaries पे जाएंगे. But before we move on to Peshawar, any word on Iftimania? Iftimania he has up until now he has the highest strike rate for any batsman in PSL 9. For anyone who has scored over 100 runs in this PSL, he has a highest strike rate of 200. Something that we have not seen from him in the past seasons, but this season he's been magnificent. You can maybe hand it over to the coach Abdul Rahman. He's the kind of guy who knows how to get performances out of up there, or you can give it to the fact that he's more comfortable in Multan given the KP personnel that is operating in Multan. I think it's a combination of everything. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इफ्तिखार अहमद जो है बहुत ही अंडर परफॉर्म प्लेयर रहा है इन PSL. तो मे बी दिस ईयर ही हैज़ डिसाइडेड कि नहीं कि मैंने परफॉर्म करना है अपनी टीम के लिए. ब्लेसिंग ये भी हो गई कि ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ अ टीम जहाँ पे कोच भी he has have a professional relationship with, और फिर कैप्टन भी रिजवान है तो पेशावर कनेक्शन भी है. तो वो ऑब्वियसली it sort of plays out. मगर even though उसके stats अच्छे नज़र आ रहे हैं PSL 9 में, I still feel के he could have done better in terms of winning games for his team. अभी तक देखें तो आई थिंक उसने एक या दो गेम ही मेरे ख्याल से शायद फिनिश किए हैं जहाँ पे मुल्तान एंड अप विनिंग द गेम. तो कल का गेम भी अगर आप देखें तो पेशावर ने जब उसका कैच छोड़ा था साइम अयूब ने, उसके बाद से he should have take that game away from पेशावर, मगर ऐसा हुआ नहीं. And then they ended up losing by 4 runs. So मैं एक पैटर्न नोट कर रहा हूँ कि इफ्तिखार अहमद की ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस तब आती हैं जब मैच एक तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, एंड देन ही इज़ नॉट एबल टू पुल इट ऑफ. आपको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी अर्लियर इन 2023, और वहाँ पे भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि ही वाज जस्ट
Pakistan lost that game, but he tried his best, but he could not finish the game. तो वो मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो अब इफ्तिमेनिया के लिए वो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली कि टू बेसिकली मेक श्योर कि ही इज़ नॉट ओनली स्कोरिंग बट ही इज़ ऑल्सो विनिंग द गेम्स, क्योंकि the point is कि he is playing as a finisher, or regardless of what the situation he walk in, the expectation is कि उसको मैच फिनिश करना है, उसको एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है, और जितने ज़्यादा वो मैच फिनिश करेगा उतना ज़्यादा वो ख़ुद भी कॉन्फिडेंट होगा और फिर टीम को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा. पाकिस्तान टीम में हम ये बहुत शिद्दत से लैग कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि वो आगे के मैचेस में किस तरह से परफॉर्म करता है, बट सो फार हिज पर्सनल नंबर्स हैव बीन रियली गुड. I think he just need to step up in terms of actually making it count, the runs that he is scoring at a higher rate. बिल्कुल. I personally believe कि he's striking the ball far better than any other batsman so far. Or he's giving returns to the Multan management कि यार आपने आपने faith दिखाया मुझ में, and he's able to perform for them. But a little lesson for Imad Wasim to learn कि आपने मैच किस तरह फिनिश करना है. अब उनको क्या लेसन मिलना है, उन्होंने तो उनसे तो कनेक्ट ही नहीं हो रही बॉल्स. वो तो बेचारे पता नहीं, उनकी तो सारी फॉर्म ही जो है वो कराची के साथ ही चली गई है मेरे ख्याल से. तो आई मीन आप देखेंगे लास्ट ईयर ही वाज स्कोरिंग एट 176 स्ट्राइक रेट, राइट. और इस बार तो अब तक मेरे ख्याल से शायद ही इज़ नॉट एबल टू हिट अ सिंगल सिक्स in all the innings that he has played so far. तो ये एक बहुत ही क्यूरियस केस है इन द सेंस के हमारे प्लेयर्स रेगुलरली जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं एट डिफरेंट एवेन्यूज़, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो या जो मर्जी हो, और ये खेलते खेलते आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं. तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो नॉर्मली लोगों को ब्रेक मिलता है, इंजरी से वापस आते हैं, या उनको कोई फिटनेस इश्यूज होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, या कोई एडेड प्रेशर होता है उन पे कैप्टनसी का या मैनेजमेंट का. तो वन कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है कि उसका टोल हो रहा है प्लेयर पे, बट एक बंदा ना कैप्टन है ना कुछ है, वो सिर्फ रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो डाउन हो जाती हैं. तो ये इस पे भी देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है. Yeah, it's captaincy can be a factor. And speaking of captaincies, bogging someone down, Babar Azam has been, in phenomenal form. He's so far the leading run scorer of the PSL, and he's scoring at 152 runs for every 100 balls. तो आप कह सकते हैं कि उनसे एक तरीके से पाकिस्तान की कैप्टनसी लेना है वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इट लुक्स लाइक कि ही हैज एलिवेटेड हिज गेम. मतलब शॉट्स ऐसे खेलना, इतना कंसिस्टेंटली रन्स करना. हम लोग लास्ट गेम में बात कर रहे थे कि उसामा मीर और उनका मैचअप होगा. Although Osama Mir did get him out, but he also ended up getting some slog sweeps out as well. So Babar Azam, in general has improved, and उनकी जो contributions हैं up until now for Peshawar Zalmi, they're very crucial. और I think I think it's sort of how should I word this? It's sort of a bad news for Peshawar in a sense that the batting is so heavily reliant on Babar Azam. जब जिस गेम में भी I think against Islamabad, जब बाबर आजम पहली बॉल पे रन आउट हो गए थे, the batting just sort of fell.
or it did not look like they had any answers against Islamabad. So I think key for Quetta would be to try to get Babar out as soon as they can and put the batting under pressure. देखें वो केस तो हमेशा से रहेगा, चाहे बाबर जिस नंबर पे भी आके खेले, ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर कि जिसके अराउंड टीम चलेगी। तो ऑब्वियसली जब वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि वो पूरा 20 ओवर खेले, और जब वो नहीं खेलेगा तो ऑब्वियसली फिर बाकी लोगों को उसके अराउंड जो हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, जो कि अभी तक उस तरह से साइम के अलावा, एंड देन आई थिंक आप पावल को कह सकते हैं कि उसने आके कंट्रीब्यूशंस की हैं, उसके अलावा जो है ना किसी और ने उस तरह से कंट्रीब्यूशंस नहीं की हैं। तो जब वो आना शुरू हो जाएंगी देन इट विल बी दे विल बी द टीम टू बीट। अगर आप देखें ओवरऑल सारी टीम्स में यही वो लोग काफ़ी अपने टॉप ऑर्डर पे रिलायंट हैं। आई थिंक इस्लामाबाद को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका मिडल ऑर्डर भी ऐसा है कि जहाँ पे शादाब की भी परफॉर्मेंसेज आई हैं, आज़म खान की भी आई हैं, तो वी कैन नॉट से कि वो लोग टॉप ऑर्डर पे रिलायंट हैं। बट बाकी टीम्स जो हैं, जैसे कराची का उल्टा है, कराची जो है वो मिडल ऑर्डर पे रिलायंट है बहुत That was ज़्यादा। my point coming in. तो वो टॉप ऑर्डर उनका बिल्कुल नहीं चल रहा, ऑल्दो कि आज टिम साइफर्ड ने रन्स किए हैं, एंड एट वन पॉइंट जेम्स विंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट he could not score more runs. But the point is कि a lot of teams are top order reliant. वो चाहते हैं कि अपने उनके टॉप ऑर्डर से लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रन करें और ज़्यादा परफॉर्म करें, जो कि पेशावर के साथ भी है। और एंड आई थिंक जहाँ तक आपने बात की कि बाबर से कैप्टनसी का प्रेशर हटा तो ही वाज एबल टू स्कोर मोर फ्रीली। आई डोंट थिंक कि उसको कैप्टनसी की वजह से कोई फ़ायदा हुआ है। आई थिंक कि वो जिस टाइप का प्लेयर है और वो जिस राउट पे चल पड़ा है टू अचीव ग्रेटनेस, ही हैड टू मेक दैट एडजस्टमेंट रिगार्डलेस कि वो कैप्टन है कि नहीं है। ही स्टिल अ पेशावर ज़ल्मी कैप्टन, तो उस पर प्रेशर तो है। और अगर वो प्ले ऑफ में नहीं क्वालिफाई करते या प्ले ऑफ में जाके अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो उसकी कैप्टनसी पे दोबारा से बातें होंगी। अभी तो सब गुडी चल रहा है क्योंकि ज़ल्मी मैचेस जीत रहा है। जब भी मैच हारते हैं ऑलवेज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी डिस्कस इज हिज कैप्टनसी। तो कैप्टनसी का इशू इतना नहीं है। द गुड थिंग अबाउट हिम इज़ के ही हैज़ रियलाइज्ड कि यार कि मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं, and if I have to perform if I need to be the best, then I need to address these shortcomings. उसकी वजह से काफ़ी उसने एडजस्टमेंट्स किए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो he used to be very good on cut shots, पॉइंट पे गली एरिया पे he used to score a lot of runs in that area. वो अब आप देखें कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ पे अब नहीं खेलता है। ही इज़ मोर ऑन द स्क्वायरिश साइड ऑफ द ग्राउंड, जहाँ पे वो स्क्वायर खेलना चाहता है, थोड़ा कवर्स में खेलता है। स्पिनर पे अभी भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि स्पिनर पे इतने ज़्यादा एरियाज उनके पास नहीं है। बट द गुड थिंग इज़ कि ही इज़ इवॉल्विंग, ही इज़ एक्वायरिंग न्यू स्किल सेट्स, उसको ट्राई कर रहा है मैचेस के अंदर, एंड देन ही इज़ एबल टू स्कोर रन्स। वेयर एज अगर आप दूसरे प्लेयर्स को देखें तो दे आर स्टिल स्टक इन देयर ओन कंफर्ट जोन, कि जहाँ पे वो नई चीज़ें इस तरह से ट्राई करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बाबर का ग्राफ ऊपर गया इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्राइक रेट और हिज स्कोरिंग एबिलिटी। तो दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी, एंड होपफुली बाय द टाइम वर्ल्ड कप स्टार्ट्स he will be a completely different batsman. We can hope, because he's the key. Babar Azam ka, it's imperative कि उनका फॉर्म वर्ल्ड कप तक जाए।
because as we all mentioned कि बाबर आजम अगर नहीं टिकते हैं तो फिर आपकी बैटिंग एक तरीके से जस्ट अ वॉकिंग विकेट. तो चलते हैं इसी के साथ साथ हम लोग क्वेटा पे आते हैं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर सिटिंग एट द टॉप. Quetta is on 2, Peshawar's on 3. Quetta has been, they've had a better season. और आप कह सकते हैं कि उनका बॉलिंग उनकी बेहतर हुई है. उनका टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंसेस आना शुरू हुई हैं. उस्मान तारिक एक तरीके से रेवलेशन है, बट टुडे इट लुक लाइक people were able to size him up. Especially Shoaib Malik, I felt he was able to really size him up. उन्होंने एक तरीके से they were covering up their off stump and then charging the bowler. The biggest disappointment has been Sarfraz so far. Although I feel like today was his first game where he came in early, where he had the chance to build his innings. But prior to this, every other game he had, it was he had to go from ball one. Khwaja Nafe, since his debut innings against Lahore, hasn't been able to make an impact either. Riley Russo has not been able to make an impact either since taking up the captaincy. I feel like problems are brewing for Quetta. Things are looking good, but there are definitely some problems to address for Quetta. नहीं, डेफिनेटली उनकी बैटिंग में इश्यूज हैं. अगर आप देखें तो सिवाय वो लाहौर वाली विन के आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग विन्स नहीं आई हैं. अगर आप इस्लामाबाद वाला गेम देखें, रायली रूसो वाला आउट, इट कुड हैव टेकन देम, रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट. मगर ठीक है कि वो जो भी हुआ एंडेड अप विनिंग द गेम. अगर आप इवन कराची वाला मैच देखें जो रदरफर्ड ने उनको जितवाया है, इट वाज आई थिंक द कराची गेम टू लूज, जहाँ पे वो बेसिकली उन्होंने जिस तरह से उसको बॉलिंग कराई है. येस, इट वाज अ स्पेशल इनिंग्स, बट आई थिंक कराची की बॉलिंग वाज ऑर्डिनरी इन दैट गेम. बट द पॉइंट इज के जेसन रॉय भी बहुत ज़्यादा इस बार अभी चले नहीं है अब तक. इट इज़ ऑल साउथ शकील, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो टॉप ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं. मिडल ऑर्डर अगर आप देखें तो उनकी मिडल ऑर्डर से कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेज आ ही नहीं है. रदरफर्ड 6 नंबर पे बैटिंग करने आता है एंड ही इज़ द वन हु इज़ स्कोरिंग. तो द पॉइंट इज़ के अब ये कितना जल्दी ये लोग ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज़ रिमेन टू बी सीन. बट अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता तो देन टूवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है फॉर द प्ले ऑफ इज़ ऑन द लाइन, अगर आपके प्लेयर्स अगर आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली इन द मिडल ऑर्डर्स, वहाँ पे फिर आके टीम के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन बन सकती है. तो so far they are in a good spot, magar within 1 or 2 matches everything can be changed. Yeah. I think सबसे बड़ी disappointment has been Riley Russo, considering that he has been the best overseas batsman in the PSL. This PSL has been very underwhelming. I assumed and I hoped that he would be able to score runs this season, given the fact that Quetta, he was a high top scorer last season as well. I feel like one good innings from either one of these guys. Khwaja Nafe, एक game जिता चुके हैं. For an emerging player, you'll take that any day. Or but for guys like Sarfraz or guys like Russo, you need a performance. They've had individual brilliance. Rutherford की individual performance आई थी. Jason Roy and साउथ शकील की पार्टनरशिप थी जो आपको एक अच्छा स्कोर करके ले गई थी. So individual performances पे आप ज़्यादा लंबा
नहीं सस्टेन कर पाएंगे. यू नीड अ टीम परफॉर्मेंस व्हिच इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम पेशावर में टॉप ऑर्डर के साथ साथ उनका लोअर ऑर्डर भी स्टेप अप कर रहा है. दे आर गिविंग देयर बॉलर्स अ चांस टू डिफेंड देयर टोटल. जहाँ तक बात आ रही है डिफेंडिंग की, आमिर जमाल, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ही इज़ बिन एक्सपेंसिव, बट दिस पास्ट गेम अगेंस्ट मुल्तान उन्होंने मतलब माइंड ब्लोइंग स्पेल कराई. इकोनॉमिक, आई थिंक 3 आई थिंक चौथे ओवर में उनको मार पड़ी अगेंस्ट इफ्तिखार, बट 3 4 आई थिंक आफ्टर 3 overs you only gave away 18 runs or something like that and took 2 wickets. So things are looking in a good trajectory for Peshawar, even though they've had losses on their table, but things are looking in an upward trajectory for Peshawar. या डेफिनेटली उनके प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. जब ऊपर वाले नहीं करते तो नीचे वाले कर रहे हैं. एवरीबडी इन देयर ओन रोल परफॉर्मेंस आ रही है टीम के लिए. तो इट्स अ गुड साइन फॉर देम, एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम जहाँ पर उनको अपनी प्लेइंग 11 जो है ना वो बिल्कुल अब लॉक कर देनी चाहिए. कि we need to stick to one playing 11 that will basically gonna go on to play for the rest of the matches. क्योंकि बहुत ज़्यादा अब चेंजेस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि they are in a comfortable spot. They just need one more win, I think, to get qualified. 2 गेम उनके मेरे ख्याल से रहते हैं. तो I think they are 4-4, right? They're 4-3 and one notice. 4-3-1. So basically 2 game रहते हैं. They need one more game that and to be on the safe side, they need to win both of their last matches. But अगर एक मैच भी वो जीत जाते हैं तो they will be in a comfortable spot. मगर the point is के they don't need to make too many changes now. They have players who can be in the playing 11 जिन्होंने अभी तक परफॉर्म किया हुआ है, एंड दे शुड स्टिक टू इट. जहाँ तक बात क्वेटा की है, तो क्वेटा में आई थिंक एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि उनकी बॉलिंग में भी इश्यूज हैं. उनकी बैटिंग के साथ साथ उनकी बॉलिंग में भी इश्यूज हैं. आज भी अगर आप देखें तो उनके पास थर्ड पेसर जो है वो मिसिंग है. लाइक दे आर स्विचिंग बिटवीन वसीम जूनियर एंड हसनैन, मगर वो जो है एक इशू आ रहा है उनको. और दूसरा उनका स्पिन अटैक अच्छा है, बट आई थिंक अबरार और उस्मान तारिक जो है ना दोनों को इश्यूज आ सकते हैं इन द लेटर मैचेस, क्योंकि टीम्स अब उनको वर्कआउट कर लेंगी. आई थिंक अबरार के पास फिर भी सर्वाइवल चांस ज़्यादा है because of he has more variations in his armory. उस्मान तारिक को मसला हो सकता है, and it will be a very interesting thing to see कि पेशावर कल कैसे खेलता है इनको. क्योंकि ऑफ स्पिनर बाबर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता है. Saim Ayub have his fair share of struggles against off spinner this season. तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो लोग इसको कैसे निगोशिएट करते हैं. बट आई थिंक टूवर्ड्स अ लेटर एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जहाँ पे प्ले ऑफ आएंगे या रेगुलर मैचेस, जो आखिर के जो 1-2 मैचेस रह गए हैं हर टीम के, उसमें क्वेटा को इश्यूज आ सकते हैं अगर उन्होंने अपनी बॉलिंग जो है ना वो बेहतर नहीं की इन टर्म्स ऑफ के जो उनके जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उसको एड्रेस अगर उन्होंने ना किया तो they will find themselves in a tough spot. Yeah, absolutely. They have, I think they're gonna have to fit in Sohail Khan. They're playing with Mohammad Amir and Hasnain, and उनको 3 पेसर खिलाने पड़ेंगे. उन्होंने अगर नहीं खिलाए तो आई फील है कि मोहम्मद आमिर, सोहेल खान के साथ आई थिंक योर बेस्ट बैट इज़ जूनियर. आई अंडरस्टैंड कि जूनियर को मार पड़ती है, एंड आई अंडरस्टैंड कि हसनैन को भी मार पड़ती है, बट हसनैन
का आई थिंक वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको उसमें आई डोंट थिंक उसने उसकी कोई मैच कंपेरेटिव प्रोफेशनल मैच प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है. सेम थिंग same thing with Naseem Shah, as we talked about earlier in our show, previous shows. कि वो Hasnain, Naseem Shah, they don't look like they are ready for international level cricket. या इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि PSL लेवल क्रिकेट. तो जूनियर के साथ एटलीस्ट ये है कि वो उसका एक एज है, वो डेथ में आपको कंट्रोल फिर भी दे देता है, विकेट्स लेके दे देता है, फील्डिंग में मुनासिब है. तो आई फील लाइक कि विद they would want to play three seamers, and they already have three spinners, with one being an all-rounder in the shape of Akeel Hossain. बट आपने बात की पेशावर की प्लेइंग 11 को लॉक करने की. आई फील लाइक कि आई वुड मेक वन चेंज, and that is to strengthen the middle order. At what cost, I don't know, but I would include Hussain Talat. Now that he's in the squad, I know he's a replacement player, but I feel like they need one proper middle order batsman who can um, be an anchor as well if need be. The TKC की फॉर्म थोड़ी सी आउट है, हारिस की फॉर्म भी थोड़ी सी आउट है. You cannot rely on both of them. I know these guys are big match players, but it's kind of hard to rely on them given the form that they're in. And I feel like that's where Hossain Talat steps in and fulfills that gap that I feel Peshawar is facing. नहीं, हुसैन तलत का ऑप्शन अच्छा हो सकता है क्योंकि वो बॉलिंग ऑप्शन भी देता है आपको. तो आई थिंक द बेस्ट बैट वुड बी कि आप इट्स अ टॉस अप बिटवीन पॉल वॉल्टर एंड हुसैन तलत. क्योंकि अगर आप देखें तो TKC हैज़ बिन स्ट्रगलिंग. तो अगर आप TKC को अगर आप ये रिप्लेस करते हैं तो देन पॉल वॉल्टर को आप खिला सकते हैं क्योंकि बैटिंग में ही इस ओके, बॉलिंग में थोड़ा सा उसका इशू है रन लीक करने का. बट अदर देन दैट आई थिंक ही कैन बी एन ऑप्शन टू. बट अगर आप हुसैन को भी ऐड करते हैं तो वो भी बॉलिंग ऑप्शन आपको देता है. ही हैज़ वेरिएशंस और उसको आइडिया भी है क्योंकि अब सारे मैचेस ज़्यादातर अब कराची में होने वाले हैं. पिंडी लेग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो he can be a good option as well. Yeah, I think that's probably the only missing link in Peshawar Zalmi's 11. जहाँ तक बात रही क्वेटा की, like we all mentioned, they have a problem brewing with their middle order, with Riley Russo, Sarfraz, to a certain extent Khwaja Nafe. उन लोग की फॉर्म थोड़ी अगर हिट नहीं होती है, then Quetta is in big trouble. Bowling combination, I can live with the fact that they can go with another day. Like another day, they'll keep their bowling the same because that is what's given them results. But their batting, you're gonna have to make that call. I mean, obviously Riley Russo to nahi batte. You have Sajjad Ali in the bench where he's a batsman. He's had scored runs in the national T20. So would it be fair to drop Sarfraz given his recent form, or do you think Sajjad Ali ko Sarfraz should carry on? I mean, they have the option of Sajjad Ali and Bismillah Khan. Yeah. तो मगर प्रॉब्लम वही है ना कि मिडल ऑर्डर में दोनों नहीं खेलते, और क्योंकि अब साउथ को क्योंकि आपने ऊपर खिला दिया है, तो नीचे आके पास जगह नहीं है. द ओनली पर्सन दैट कैन रिप्लेस सरफराज इज उमैर बिन यूसुफ. मगर फिर मसला ये है कि आप कीपर किसको खिलाएंगे क्योंकि फिर आप कीपर एडजस्ट नहीं कर सकते. तो आई थिंक जहाँ आपने इतना स्टिक किया है सरफराज के साथ, तो दे शुड कंटिन्यू विद हिम क्योंकि कीपिंग तो ही इज़ डूइंग अ फाइन जॉब विद इट. तो कीपिंग में तो मसला नहीं है. हाँ, बैटिंग में उसके इश्यूज हैं और वो बहुत अरसे से T20 क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं. तो उसका तो अब
you cannot really do anything. और फिर क्योंकि अब आपने साउथ को वाइस कैप्टन बना के ऊपर प्रमोट कर दिया है, तो फिर आप नीचे नीचे आप उस तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर आपका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगा. तो आई थिंक द करंट कॉम्बिनेशन दैट दे हैव इज़ द बेस्ट दे गॉट. उनको बहुत ज़्यादा, उनके पास लग्जरी नहीं है बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की, स्पेशली इन द बैटिंग ऑर्डर. वो लोग, अगर आप देखें तो वो लोग ज़्यादातर बॉलिंग के साथ ही खेल रहे हैं. ये जो चेंजेस वो करते हैं वो बॉलिंग में करते हैं. तो आई फील लाइक वसीम जूनियर शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो उसके पास वेरिएशन ज़्यादा हैं. वो डेथ में भी बॉलिंग करा लेता है, वो मिडल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कराता है, फील्डर अच्छा है. तो ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम रिगार्डलेस कि उसकी इकोनॉमी जैसी भी है. I think the other thing is because they are playing 3 spinners, उसकी वजह से वो लोग एक नया बॉल का बॉलर मिस कर रहे हैं. और उनको फिर उसकी वजह से वसीम जूनियर से जो है ना नया बॉल करवाना पड़ जाता है. तो अब उस पर देखना पड़ेगा कि कैन दे गो विद 2-3 spinners, या उनको 2 स्पिनर के साथ एंड दे कैन ऐड 1 more पेसर, जो सोहेल खान की जो आपने बात की. तो वही वाली बात है कि ऑन पेपर दे लुक लाइक अ वेरी गुड टीम, मगर मसला वही है कि दे डोंट हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द प्लेइंग 11, और वो उनको समहाउ फिट इन करने इफ दे वांट टू मूव फर्दर इन द टूर्नामेंट. क्योंकि अब अभी आज का गेम आप देख लें तो उनके पास नए बॉल का बॉलर कोई इस तरह से था नहीं, और वो 3 स्पिनर खिला रहे हैं. स्पिन पे, इन पिचेस पे स्पिनर्स को खेलना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पेसर्स, क्योंकि पिंडी की पिच यहाँ पे बारिश वगैरह हुई है, जिसकी वजह से मॉइस्चर है, बॉलर्स को हेल्प आउट मिल रही है जो अच्छे एरियाज में बॉल गिरा रहे हैं. तो आपको उसके लिए आपको पेसर्स ऐड करने पड़ेंगे. Before we move on to matchups, आपको लगता है हसरंगा आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या इज ही completely out? आई थिंक ही इज डन विद द टूर्नामेंट. अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है. आई मीन अगर आप उसको ज़बरदस्ती लेकर आ जाएं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई डोंट थिंक दे नीड हिम एनीमोर. चलें, तो इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं मैचअप्स पे. For me, it's gotta be Mohammad Amir versus Babar Azam. Mohammad Amir, all the theatrics are not there this season, but Mohammad Amir is still a good new ball bowler. कंट्रोल है, लाइन लेंथ अच्छी है, पेस भी है, और बाबर आजम, being बाबर आजम, it'll be a good bat and good competition between bat and ball. But if you remove that, I think it's a pretty evenly contested game. Any matchups are you looking forward to? आई मीन अगर आप देखें तो बाबर का या साइम का मैचअप जो है वो आमिर से भी बन सकता है, वो अबरार से भी बन सकता है, वो उस्मान तारिक से भी बन सकता है. तो these are the 3 bowlers that I'm looking forward to, कि जिस तरह से पेशावर जल्मी के बैटर्स उनको कैसे जो है ना वो टैकल करते हैं. ऑब्वियसली हमने देखा है पिच में असिस्टेंस है बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इनकी वेरिएशंस हैं इनकी. उस्मान तारिक अभी भी नए हैं. आई डोंट थिंक कि बाबर ने उनको खेला हुआ है, तो साइम ने शायद खेला हुआ हो, या आई डोंट नो साइम ने भी खेला है कि नहीं, बट तो प्लेयर्स को इश्यूज आएंगे, बट दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स that will be going up against each other. तो it will be interesting to see कि ये लोग कैसे negotiate करते हैं. अगर बाबर और साइम ने negotiate कर लिया स्पिन थ्रेट को क्वेटा की, तो then Quetta will be on the receiving end. बिल्कुल. क्वेटा का जो, आई थिंक इफ दे विन दिस दे आर थ्रू. I that will have them 5 wins, and that will put them at 8-10 points
I think if they win this, they are through. Or well, that would mean that Quetta and Multan are through if they win this, and then if Peshawar win this, then they're not through officially, but they would be in a very strong position, and the fourth spot will be up for grabs between Karachi and Islamabad. तो इसी के साथ साथ हम लोग का सेशन आज रैप अप होता है. Thank you for joining in and watching our review. Watching our preview. If you have not subscribed to Zalmi TV, please go ahead and subscribe to Zalmi TV. And please go ahead and check out the Gulley Cricket Show. The link of that should be in the bio, where we cover Pakistan cricket and PSL all together. आज तक के लिए इतना ही. हम लोग को इजाज़त दें. इंशाल्लाह next time मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.